So our first session or first question is, and I believe I have answered this before, but it's okay. Sometimes it's okay to repeat the question and answer them. A while back, someone had asked about the 4 promises that we see sometime in the Quran and sometime in our older ALWAAZ. But remember, the ilm is on the steps. ilm जो है वो दर्जा बदर्जा है. जब आप फर्स्ट ग्रेड में होते हैं तो आपको क्या सिखाया जाता है? ABCD 1 2 3. जब हम मजहब के अंदर, इल्म के अंदर, तरीके के अंदर बच्चे थे तो हमको बच्चों की तरह सिखाया गया. When we were children, in the understanding, in the knowledge, in our religion, in our tariqa, so we were taught like children. Not that they were wrong, but we were not able to comprehend anything of the higher level knowledge. But I believe, I trust that today we are no longer children. Do you all agree with me? I don't think we can say we are still children. Inshallah, we are not children. And the question is कि किसी अलवाइज ने कहा कि हम 4 प्रॉमिस करके आते हैं इस दुनिया में. 4 प्रॉमिस करके आते हैं. पहला, अजरे अजीम नो कॉल, પછી માં ના પેટમાં ના અંદર, પછી बैयत लेवा टाणे, પછી इसमें आजम नो प्रॉमिस. ये गुजराती के अंदर सवाल था. So let me repeat that you have made 4 promises before and just after you were born. And my answer stands the same. It's the same answer I will give you which I had given before. There was a promise when we are in the world of particle, world of soul. हाँ, एक प्रॉमिस था जो हमने किया था जब हम आलम ज़रात और आलम अरवा में थे. उस वक्त हमने इमाम के नूर से प्रॉमिस किया था, खुदावंद ताला से प्रॉमिस किया था कि हम दुनिया में जाकर वो काम करेंगे जो आप चाहते हैं. We had made a promise to Noor Ilahi that we will go to the world and we will do what you want us to do. That is the first promise. The second promise जो है ना, माँ के पेट के अंदर, I refuse that logic. I refuse that logic. On base of what? What is my base of refusing that? Our ALWAAZ has said it. Matter of fact, our हमारे पीरों ने भी ये कहा है. तो मैं कौन सी खाद की मूली हूँ इस बात को झुठलाने वाला? Why would I say I do not agree with this logic? Who am I? I'm nobody. But the logic is, in the womb of the mother, we do not have a rational soul, but we have a mineral soul, a vegetative soul, and an animal soul, but no rational soul. And the promise only can be taken with a rational soul. अगर कोई आदमी पागल है, कोई बच्चा है, कोई आदमी सोया हुआ है, आप उससे क्या प्रॉमिस लेंगे? आप उससे क्या प्रॉमिस लेंगे? You see the logic? Remember, logic, the ilm, the knowledge must be applied.
आप बोलेंगे तो फिर हमारे अलवाइजों ने क्यों कहा? क्योंकि वो हमको बच्चों की तरह समझा रहे थे, क्योंकि हम बच्चे थे ना। आज हम नो लॉन्गर हम बच्चे हैं, वी आर नो लॉन्गर चिल्ड्रन। सो मैं आपको एक एडल्ट की तरह समझाता हूँ। I do not want to treat you like a child. Why? Because I don't see you as a child. मैं आपको बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको बच्चा नहीं देखता हूँ। Do you agree with me? I hope you are, because I don't see you as a child. So I'm telling you logically that in the mother's womb, there was no promise taken, because that sperm, that particle, that soul, the mineral soul, the vegetative soul, I'm breaking it down for you, ताकि आपको ऐसा नहीं लगा कि खाली अजीज सर ने बोला और चले गए, हमको एक्सप्लेन नहीं किया। Mineral soul does not have intellect, no rational. Vegetative soul, no intellect, no rational. Animal soul, no rational soul, no intellect. How can you take a promise with no intellect, no rational soul? ये तो खुदा की एक अनाई हो जाती, अनफेयरनेस हो जाती, कि वो एक ऐसे बच्चे से प्रॉमिस लेते हैं जिसके बाद अभी तक अक्ल डेवलप नहीं हुई है। देखा आपने? लेट्स कम टू द थर्ड वन, भैया। जब हम भैया लेते हैं, एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज टू लर्न दिस टुडे। जब हम भैया लेने जाते हैं तो क्या हमारे पास रेशनल सोल होती है? नहीं, नहीं होती है। तो कौन प्रॉमिस करता है? कौन भैया ले रहा है? बच्चे की बैयत कराने जाते हैं, बच्चा बैयत नहीं ले रहा होता है। थिंक, यूज द नॉलेज एंड इंटेलेक्ट। Our parents are promising on our behalf. Our parents are promising on our behalf that when my child will grow up, Ya Mola, he will serve you, he will follow your farman, and he will follow the promise he made with you before he was born, before he was conceived. When? When was that? On the day that you said, I want to go to the world to serve your Mola, I will do everything you will tell me to do. Remember the promise, the first one? That is the promise that we are repeating at the time of Baya. But who is taking the promise on your behalf? Because you are a child, you don't understand any of that. No rational, no intellect, develop intellect. आपने देखा, लॉजिक, हमारा मजहब इंटेलेक्ट के ऊपर सिट करता है, अक्ल का मजहब है हमारा। Our तरीका sits on logic and intellect. Use that. The door of enlightenment will open for you. You will be able to see the batin of our tariqa. And then the final, because now you are adult, you go to Mola Baba and say, Ya Mola Baba, I'm ready to do ibadat bandagi. Give me a bowl. Please give us Isme Azam. और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं तेरी इबादत बंदगी करूंगा। आपने देखा कि ऊपर जब हम उसके नूर में इसके पास से, और फिर जब इसमें आजम लेने के लिए किए, तब हमने ये प्रॉमिस किया था। बिकॉज वी आर एडल्ट, लॉजिक, intellect has been developed. I hope you understand. Let's come to our second question. In the part 5 of our dua, we say,
AOU, who believe, do not betray. Okay, for this question, I will refer you to our dua meaning, the interpretation of the dua. उसके अंदर आप जाएं और 5वें पार्ट के अंदर आप उसको देखें, इस सवाल के जवाब को, कि हमने कौन सी प्रॉमिस की है और कौन सा बिट्रे हो सकता है. And then he's talking about some personal question which we will not worry about or talk about. That was his personal question. Question number 10. This is the 10 from the last week. Today's number 2. Here we have 2 questions from the listener. How did Sultan Muhammad Shah Salawatullah Alaihi, may our soul be sacrificed to the Imam, get his Ru'ul Qudus as at birth, is at birth? Okay, चलो मैं आपका सवाल समझ गया कि इमाम के अंदर, ये सुल्तान मोहम्मद शाह की बात नहीं हो रही है, ये तमाम इमामों की बात हो रही है. चूंकि हमने एक जगह पर कहा था कि हमारे पास कितनी किस्म की रूहें होती है, मिनरल सोल, वेजिटेटिव सोल, एनिमल सोल, rational soul, human soul, but Imam has an additional soul. इमाम के पास एक और रूह होती है जिसको रूहुल कुद्दूस कहा जाता है. वो रूह जो खुदावन ताला ने आदम के अंदर फूंकी थी, वो रूह की बात हो रही है, रूहुल कुद्दूस. तो हमारे ये भाई सवाल पूछते हैं कि इमाम के अंदर, शायद सुल्तान मोहम्मद शाह इसलिए उन्होंने इस्तेमाल किया कि चूंकि सुल्तान मोहम्मद शाह दुनिया बाने बहुत ही छोटे थे. Maybe the reason he is using the example of our previous Imam, because he was very young physically at the time of Imamat. Maybe that's why he's using this example. How does he get his Ruhul Qudus? Just like Adam got his Ruhul Qudus. आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. जिस तरह से आदम के अंदर खुदावन ताला ने अपनी रूह फूंक दी, इसी तरह से पिछला इमाम अगले इमाम के अंदर रूह फूंक देता है. आपने देखा कि जिस तरह से पिछला इमाम, जिस तरह से खुदावन ताला ने आदम के अंदर रूह फूंकी थी, तो चूंकि इमाम ज़मान इज अली अल्लाह, वो उसी तरह से जिस तरह से आदम के अंदर रूह फूंकी गई थी, वो अपने आने वाले इमाम के अंदर अपनी रूह फूंक देता है. Second question, you mentioned on the Sunday morning lecture about 2 weeks ago that a Mu'min will have to undergo 70 resurrection before he is Fanafi Imam. What is the time scale? Very good question. हमने एक सेशन के अंदर बात की थी कि जब कोई मोमिन सालिक, एक आबिद इबादत करता है और इस इबादत उस इसमें आजम में कामयाब होता है, when a मोमिन सालिक, when an abid does the ibadat and is successful in his isme azam, then he goes through a resurrection. During the resurrection, he goes through 70 stages of resurrection. My friend is asking, what is the time scale? Physically,
time scale is about 180 hours, 7 days, 8 nights. Spiritually, because you are in the timelessness, spacelessness, you don't feel any of that. Listen to me again. Physically, he takes about 7 days, 8 nights, 180 hours to go through this resurrection. Spiritually, he is in timelessness and spacelessness. He does not feel any time passing. For him, it happens in the blink of an eye. उसके लिए ये पलक झपकने में होता है, क्योंकि वो टाइमलेसनेस में, स्पेसलेस में होता है, रूहानियत की दुनिया में होता है, जहां पर वक्त और मकान नहीं होता. So I hope you understand the both side of the time frame, time equation. Thank you. Let's come to our next question. Question number 11 is regarding this Farman. Let me see if this is the complete Farman. Let's look at this Farman completely on our screen. Okay. तो यहाँ पर फरमान पूछा गया सवाल कि क्या आप इस फरमान को थोड़ा डिटेल में समझा सकते हैं. फरमान है, खुदा के मर्तबे को समझने से पहले अपना मर्तबा समझें, इसके बाद खुदा के मर्तबे का आपको इल्म होगा. Before you understand and recognize the Imam, you must recognize yourself and recognize the rank of your soul. That is the Farman in front of you. And to shed some light on this, क्योंकि मौला अली का एक कॉल है जो यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश में हमने बयान किया. And what is that? जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना. There is a call of Mullah Ali. Whoever recognize themselves will recognize their Lord. But then there is another call right next to it. Whoever recognize themselves more will recognize his Lord more. जिसने अपने आप को ज्यादा पहचाना उसने अपने खुदा को ज्यादा पहचाना. With that call of Mullah Ali, we can understand this Farman. Because our soul is from Nafsun Wahida. चूंकि हमारी रूह नफ्सुन वाहिदा से है. चूंकि हमारी रूह नफ्सुन वाहिदा से है. Sorry, my laptop is acting up. माफी. So sorry. चूंकि हमारी रूह नफ्सुन वाहिदा से है, इसलिए जब हम अपनी रूह को पहचानते हैं, and I will explain this in English for my friends who does not speak Urdu. चूंकि हमारी रूह इमाम की रूह से है, उसके नफ्सन वाहिदा से है, तो जब हम अपनी रूह को पहचानते हैं तो उसके साथ साथ इमाम की रूह को भी पहचानते हैं. इसलिए फरमाया गया कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना. लेकिन यहाँ पर मर्तबे का वर्ड है कि आप भूल ना जाए कि आपका मर्तबा क्या है, आपकी रूह कहाँ से आई है. आपकी रूह इमाम से आई है. आप क्यों भूल जाते हैं अपने मर्तबे को? आप अपने मर्तबे को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी रूह का क्या दर्जा है,
तब जाकर आप इमाम को समझेंगे। In English, because our soul is from the nafsul wahida, the single soul of the imam, when you recognize your soul, you recognize the soul of the imam. But here it says your rank, because we have forgotten our rank, that we are not merely a human, but we are from the soul of the imam. When you realize that, and when you recognize that, then you recognize your soul, and therefore you recognize the imam. In one of the Kinan, Pir gives an example of a lion and a sheep. एक गिनान के अंदर पीर हमको समझाने के लिए हमारा मर्तबा एक शेर और एक बकरी की मिसाल देता है, just so we understand our rank, कि एक शेर गुम हो जाता है और बकरियों के साथ पलता पड़ा है और वो समझता है कि मैं बकरी हूं. A lion get lost and he grow up among the sheep and he thinks he is a sheep, until one day a mother lion finds this lion. एक कब तक? जब तक एक शेर इस बच्चे को जो गुम हो गया था उसको ढूंढ लेती है और उसको कहती है कि तू शेर है, ये तो बकरियों के साथ क्यों खेलता है? She tells him that you are a lion, why are you playing and acting like sheep? वो लायन बोलता है कि नहीं, मैं तो बकरी हूं. वो लायन बोलता है कि मैं तो बकरी हूं. तब उसको पता चलता है कि वो शेर है. जब उसको वो कहां ले जाता है कि जहां पर उसको दरिया के अंदर, पानी के अंदर उसकी शक्ल दिखाई जाती है और उसको कहा जाता है कि देखो कि तुम बकरी नहीं हो, तुम शेर हो. तब उसको पता चलता है. जब हम अपना अक्स, when we see our mirror image in the light of the Imam's Noor in the Imam, then we will realize that we are not just merely a human, but we are come from the Imam, and we are the shadow, reflection of the soul of the Imam. Do not underestimate yourself. Unfortunately, यहाँ पर नाचीज का जो जहाँ से शेयर कर रहा था वो बंद हो गया कंप्यूटर, and I'm not able to charge it. Anyway, so there are more questions that I had promised to share today, but since my computer is acting up, I'm not able to share the question and I'm not able to answer the question. My apology. Let's go online and see if our friends have any question verbally, or those friends who have asked me the question earlier today, अगर आप उसको repeat कर देंगे तो आज हम उसका जवाब दे देंगे. I'm so sorry for that. Kamra Sahib, can you close the sharing part? Is it possible for you? Yes, sir, I can do that. Thank you. याली मदद. याली मदद. आपने बहुत एकदम हमको एकदम ही यानी उसका एज जो है हमको दे दिया है. अभी हमारी फर्ज ये है कि हमको उसके पे अमल करें, उसको बार बार सोचे. और मुझे इतनी बहुत खुशी हुई है कि मैं आपको एक हार पहनाऊं, ऐसी खुशी हो गई है. तो मौला आपको रूहानी हार पहनावे और ये हार की खुशबू सब लोग को, अक्षय गोबल को, अक्की दुनिया को मिले. यही मेरी दुआ है. आमीन आमीन आमीन. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू. शुक्र मौला, शुक्र मौला.
जी कामरी साहब, कुछ सवाल थे आपके पास, अगर वो आपको शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर करें ताकि उन सवाल को हम पूरा कर लें। यस सर। एक गिनान से कोई सवाल था, एक ने तारे, एक ने मारे, एक ने अली वारे। I remember one of the questions that Kamra Sahib had shared with me earlier, that can you be shed some light on this गिनान कि एक ने तारे, एक ने वारे, यानी एक ने तारे, एक ने मारे, एक ने अली वारे। The literal translation is that Ali, the Mullah, forgives one, punishes one, and keep one under his wing. जो ज़बानी तर्जुमा है अल्फाजों का वो इस तरह से है कि मौला जो है एक को तार लेते हैं, एक को पनिश करते हैं और एक को अपने विंग के अंदर रखते हैं। अब रिमेंबर, नाचीज ने थोड़ी देर पहले अर्ज की कि जब पीरों ने हमको समझाया तो हमको बच्चों की तरह समझाया, वरना लॉजिकल आप सोचे, थिंक विथ योर लॉजिक कि हाउ कैन इमाम treat three different mu'min in three different ways? Wouldn't that not be unfair of him? सोचे, पहले सवाल को सोचे कि मौला एक को पार उतारता है, एक को सजा देता है और एक को अपने विंग के अंदर रखता है, अपनी रहमत में रखता है। इमाम क्यों तीन मोमिनों को अलग तरीके से रखता है? ये तो अनफेयर हो गया। Do you see the logic? Remember, we are no longer children. We analyze with logic and intellect. समझाया ऐसा गया है कि मौला ये करता है, एक्चुअली मौला नहीं करता है ऐसा, क्योंकि मौला तो रहमान और रहीम है, वो तो आप तमाम को नूर देना चाहता है। आप एक अपनी मेहनत से, इमाम की रहमत से पार उतरते हैं, आप एक अपने आप पर जुल्म करते हैं। ला इलाहा इल्ला हुवल, I'm sorry, एक आयत नाचीज को याद आ रही है, ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि या मौला तू तो पाक व पाकीज़ा है, हमने ही अपने आप पर जुल्म किया और अपनी रूह को पनिश किया। आपने देखा पहले दो का आप समझ किए, एक मेहनत करता है पार उतरता है, एक खुद ही अपने आप पर जुल्म करता है। मौला आपको पनिश नहीं करते हैं, आप तो मौला के रूहानी बच्चे हैं। He loves you. He loves you more than you can ever imagine. He's not punishing you. It is you yourself who's cruel to yourself. आपने अपने आप को पनिशमेंट में डाल दिया। Third, he keeps them under his wings. अब ये वाला जो है लाइन वो थोड़ी अगड़ी है। This part of the Quran may need little bit more attention. Who does Imam keeps under his wings, under his protection? Those who follow his farman, those who follow the Imam, but for whatever reason, they do not succeed at the end. But because they were honest, they did everything they could do, they
tried honestly, then what does Imam do? Because you tried, Imam keeps you under his wings, and inshallah on that day he will take you to the highest level. That is our wish, our hope and our prayers. कि चूंकि आपने मेहनत की है ना, बस फिर फिक्र मत करें आप। मौला अभी रिसेंटली एक बैतुल ख्याल के फरमान में फरमाते हैं कि जस्ट सिटिंग इन द इबादत इज अ ब्लेसिंग। आप कोशिश करें, मौला आपको अपनी रहमत के साये में रखेगा। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस गिनान। जी कामरे साहब। Sir, we have a couple of questions in the chat if you want to take those. Sure, go ahead. So the first friend's asking, can you explain what happens to parents who made promise at Bayat when the child grows up and doesn't live up to the promise? हाँ, very good question, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, माँ बाप की नीयत, अमाल का दारोमदार नीयत पर है। अमाल का दारोमदार नीयत पर है। चूंकि माँ बाप की नीयत अच्छी है और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे इमाम की ताबेदारी में रहें, because their intentions are good and they do hope, wish and pray that their children will stay in the bayat, in the farman bardari, in the obedience, in the submission of the imam. They have no burden on them. आपका सवाल है ना, इसका क्या होगा? They have no burden, but because their intentions are good, they will be rewarded for their intention. It is upon the children to fulfill the promise or not to fulfill the promise. Free will is on them. The burden is on them. Parents, they did that with a good intention. They will be rewarded for that. अमाल का दारोमदार नियत पर है। चूंकि माँ बाप की नियत अच्छी थी, उसको उसका अजर मिलेगा। उसका जो बोझ है वो बच्चों पर है कि वो फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। Very good question. Thank you. जी। Sir, we have a few more questions. So another one, friends asking, is it the knowledge to spiritual progress or love for uplifting spirituality, or our good actions to progress, or is it intellect that elevates our spiritual ranks? How do we understand the role of the concept of knowledge, love, actions, and intellect individually in our spiritual enlightenment? Out of four, which comes first in our spiritual development, and how these four knowledge, love, action, intellect interconnected? उर्दू में इसको कहते हैं लाजिम व मलजूम, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी इन इंग्लिश में, उर्दू में लाजिम व मलजूम। Let's say that you promise something but you never follow up with the action. Let's say you follow up with the action but you do not understand what was required of you. Let's say you understand the requirement of the action but you never succeed. What am I telling you? I'm telling you that it is dependency on each other. यानी कि सबसे पहले इश्क, प्रॉमिस, और आखिर में भी इश्क और प्रॉमिस ही आता है। Because you love your imam, you do what? Action. You follow up with the action. But you cannot follow up with the action if you don't understand the requirement of it. आप मौला के इश्क में एक प्रॉमिस करते हैं
और उसको बाद उसके ऊपर अमल करते हैं, लेकिन आप अमल को अगर समझते नहीं है तो आप अमल कैसा करेंगे? सो व्हाट यू नीड? इल्म। और इल्म नहीं आ सकता है इंटेलेक्ट के बगैर। यानी कि अगर आपके पास अक्ल ही नहीं है तो इल्म को किस तरह से समझेंगे और उसको पालेंगे? इसको कहते हैं लाजिम और मलजूम। इश्क, अमल, इल्म और अकल, ये सब एक साथ साथ चलती है। ये सब एक साथ साथ चलती है। They all are interconnecting, connected and dependent on each other. So you take one out. Let's take your intellect out. Now, regardless of what ilm you have, what action you have, or what love you have, because you have no intellect, it doesn't matter. Let's take the ilm out. Doesn't matter how smart you are, you don't have the true ilm of the Imam, then your action will not count. Your love will not count. Your worldly intellect will not count. So let's take the love out. You understand, you have the knowledge, you have the intellect, you have the action, but you have no love for the Imam. Then why would you even do anything? It would not count. आपने देखा, they are interconnected. उसके एक मिसाल हमारे उस्ताद दिया करते थे। हमारे उस्ताद एक मिसाल देते थे। किसकी? इश्क, अमल, इल्म और इंटेलेक्ट की। वो फरमाते थे कि आप तस्वीर के दाने को देखें कि किस तरह से तस्वीर के दाने एक दूसरे के पीछे हैं। Look at the tasbih, how they are interconnected with each other. They follow each other. Just like that, the love, the action, the knowledge, and the intellect are interconnected with each other and they follow each other. Very good question. Thank you. So a few more questions. When we pass away at the ceremony of charter, we say our soul reaches asal mein wasal. I thought this depends on your spiritual progress, action, and deeds done on earth. Very few muttaqin have attained this level. अच्छा, तो पहले इसको उर्दू के अंदर सवाल को समझ लेते हैं and I will rephrase the question in English for everyone to understand. कि जब हम छांटा लेते हैं मैयत के ऊपर या रूहानी के लिए और हम कहते हैं कि रूहानी को असल में वासल करना, जबकि हर इंसान एक लेवल पर है, दर्जा बदर्जा है, और वही मुत्तकीन पाकीज़ा लोग असल में वासल होते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है। तो हम इस बात को कैसा समझें? Let me rephrase the question in English. My friend is asking that at the time of Mayyat, we take chanta for the Rohani and we say that put this Rohani, take this Rohani, accept this Rohani in your Huzur, Ya Mola Bapa, and make him one with you. आप उसको असल में वासल करें। तो हम इस बात को कैसा समझें? जबकि असल में वासल होने के लिए एक इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो मुत्तकीन ही होते हैं जो उस मकाम पर पहुंचते हैं। तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस दुआ? असल में वासल कर, या मौला तो उसके गुनाह माफ कर और उसको असल में वासल कर। This is exactly what it says. It is the dua, your wish, your hope, your recommendation in the huzur of the Imam that Ya Mola, a Rawani has come to your huzur. Please accept him. Please forgive his sin. Please make him one with
you. That is your prayer, your hope, your wish, your recommendation for the रूहानी. अब वो असल में वासिल होती है कि नहीं होती है? That is the question, right? Does this soul becomes one with him or not? It all depends on his deeds. It all depends on his action. It all depends on him. What has he done for his soul? आपने उसको recommend किया ना, तो मौला ने आपकी recommendation सुन ली. He heard your recommendation. Now, Mola will look at the soul with some mercy and say, okay, so let's say you have gone from 0 to 1 because ABC Jamaat has recommended you. I will have mercy on your soul and I'm going to put you from 0 to 1 to 2 or 3. उसको थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, उसको थोड़ा सा पुश मिलेगा. इसलिए हम रूहानी के लिए दुआ मांगते हैं ताकि उनको एक पुश मिले और वो एक एक दर्जा 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 कर करके इंशाल्लाह एक दिन असल में वासिल हो जाएंगे. लेकिन इमाम का चांद रात का फरमान पढ़े और सुने कि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी रूहानी बच्चा गुनहगार होके गुजर जाए, ताकि हमको जब मुखी साहब छाटा दे और कहे कि असल में वासल, तो हम असल में वासल. क्यों? कि हमने दुनिया में अपने हाथों से वो अमाल किए. We ourselves had worked hard for our salvation. So when Muki Sahib said asal mein wasal, truly you will become one with the Imam. But it depends on your action. That is a dua, that is a wish. Inshallah, her Ismaili, her Momin, her Bhai Bain, Mola ke noor mein aakhir on one day will become one. Inshallah. Kamle Sahib, should we stop here or do we have more questions? Sir, we have more questions, but if we can take one more. Ji, go ahead. So, sir, another question we have. So, friends trying to understand the logic. So, when someone passes away and is not a member of, in giving example of the Fidai Majlis, and then the family enrolls the soul into the Majlis, and Mukhi Sahib gives a charter on behalf of the deceased soul. So, friends trying to understand what's the logic behind it. Very, very good question. Very, very good question. Okay. And it is very logical and simple answer to that. So I don't know why you have taken the example of Fidai. Let's say this person is not in 5 saal, 12 saal, he's not in life, he's not in Fidai, he's not in Nurani. He's not in any madras. But after he dies, family member comes to Mukhi Sahib and said, can we enroll family member in 5 saal, 12 saal, life, Fidai, Nurani? And Mukhi Sahib said, if that is your wish, yes, I will accept your wish. And you know what is the reason? What is the benefit to Ruhani? That's the question, right? What is the benefit to Ruhani? Why do we do that? He has already died. He has already died. First logical answer. Who is doing the action? Your answer would be the family member. Who will reap the benefit of it? The family member. Family member have a hope, have a prayer, have a well wish, have a recommendation for the Rohani.
कि मौला उसको कुछ सवाब पहुंचाए, and therefore with a good intention they enroll them in this majalis. The sawab 99%. How many? 99%. उसका जो 99% सवाब है वो फैमिली मेंबर को जाता है, क्योंकि एक्शन किसने करा, नियत किसने करी, मेहनत किसने की, वेल विश किसने की, दुआ किसने की, फैमिली मेंबर ने। 99% सवाब फैमिली मेंबर को। लेकिन चूंकि उनकी नियत अच्छी थी ना, तो मुखी साहब उनके बिहेफ में खाना बदान, मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे। यू हर्ड राइट, may Mola accept your well wish and give boost, a push to the Rohani, recommendation for the Rohani. Very good question. I'm so proud of you. ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए। याद रखें कि इमाम के इल्म से, इमाम के हकीकी इल्म से कोई भी सवाल बाहर नहीं है। अगर आपको इमाम के इल्म पर भरोसा है तो आपके हर सवाल का जवाब है, हर सवाल का जवाब है। ये बहुत अच्छा सवाल था कि किस तरह से फैमिली मेंबर अच्छी नियत करके अपने फैमिली मेंबर को एनरोल कराते हैं। एक्शन जिसने ली, नियत जिसने की, उसको 99% फायदा, 1% रिकमेंडेशन के तौर पर रूहानी को बूस्ट मिलता है, क्योंकि उसने अपने हाथ से ये काम नहीं किया था। लेकिन चूंकि फैमिली मेंबर ने रिक्वेस्ट की है मौला के हुजूर में, तो मौला उसको एक्सेप्ट करता है और उसके दर्जे को एक पुश देता है। That is the answer to your question. बहुत नवाजिश। Thank you everybody. Thank you Kamle Sahib. Thank you everybody for asking question. And Nachid apologize for not able to answer all the question today, but we promise we will continue to answer your question. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Mullah Ali Madad. Ya Ali Madad. Thank you, sir. Ya Ali Madad. Shukran alhamdulillah. Thank you. Ya Ali Madad. Ali Madad. Thank you. Thank you. Ya Ali Madad. 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 Shukran. Ya Ali Madad. Ya Ali Madad. Mullah sukhi salamat abad rakhe aap. Ameen. Ameen. Ameen.